into robust and rapidly expanding organization, catering end-to-end offshore IT services and solution to a diverse clientele, ranging from SMBs to Fortune 500 companies in the domains of mobile, e-commerce, and web development. Beyond his entrepreneurial innovator, Surender is also an keen investor, providing support to insights they are about to impart. Thank you all for joining us, and let us make the most of this enriching experience. Please join me in giving a warm round of applause to our welcome our speaker. Hello, am I audible? Hello. Yeah, you are audible. There's a feedback. I can see the feedback. So, hello. Am I audible properly? Oh, I can't hear. Yes. Okay. Good morning, everyone. So, organizers, if you face any problem in hearing my voice, kindly WhatsApp me or call me on the phone because I can't hear you now. Right? So that's fine. I think you have put yourself on mute. Okay. So can you see my screen as well? Yes, sir. Okay. Okay. So thank you all for taking out time today morning. I don't know how the weather is in Firozpur, but in Chandigarh it was raining and it's a very nice weather. No one would like to be sitting in a room in this weather, but definitely would like to thank you all for your patience and taking out time for listening to my story. I would like to extend my gratitude to Asati sir and Kulbhushan sir, so my teachers and my mentors. So as you might already aware that I graduated from the same college as you are. I'm sitting on the same benches, living in the same hostel as you guys are. So I took admission in 1995 in mechanical engineering and I graduated in 1999. So when I joined the college that was the first batch of our college, and college was under Punjab University. And after 2 years, it was transferred to Punjab Technical University. So that's a very short introduction of myself. So how I got in touch with how I got to know Sati sir, Kulbhushan sir. So that was in those days. We were only less than 120 students because the first batch was only of 3 branches. So teachers and students had a very good relation and very good. We used to communicate a lot. We used to. I guess we are very lucky that we got entire focus and attention of our teachers. That really helped us very well, right? That gave us that confidence. That gave us so much opportunities to learn, etc. So, and again, I would say you guys again are very lucky to have such teachers and mentors who have shaped in numerous people. Many of these guys, at least I can say about my batchmates, they are very high ranked government officials. They are global CEOs of very big companies. We'll talk about it, right? So in this call, in this session, we are going to talk about my journey. How from a fresh graduate I ended up become an entrepreneur. We'll also discuss about the characteristics, life, and opportunities of an entrepreneur. So back then, establishing your startup was not a very obvious choice. But things are changing, right? So things are changing very fast now. Most of the people, they want to, rather than going for a job, they would like to become an entrepreneur, given an opportunity, right? But the biggest problem that we all face is we don't know how to do it, right? So I'll share my story, how I like what I did and how I moved from an employee to an entrepreneur. So as I said that I'm just one of you, right? Started exactly as you might have started in the same college.
as you either presume you. So even like my family background is not very different from the family background of most of you, right? So so I am the founder and managing director of this company called NETZWELT Private.LTD. So VT is a leading managed software development services provider. We develop e-commerce applications, web applications, and mobile applications. Our headquarters is in Mohali. We have offices in Ahmedabad, Berlin, and New York. So we are more than 125 people spread across these 4 locations. So because this session is about entrepreneurship, so let's see what is the textbook definition of entrepreneurship. So it's a capacity and willingness to develop, organize, and manage a business venture along with its risk in order to make a profit. So it is very important that a business should be making a profit, right? So if it's not making a profit, eventually it would shut down. And it is characterized by innovation and risk taking. If there is no innovation, if there is no risk taking, you cannot be an entrepreneur. And entrepreneurship is an essential part of a nation's ability to succeed in an ever-changing and increasingly competitive global marketplace. If you look at the status of our country, what it used to be 30, 40 years ago versus what it is right now, we know like it is because of these very innovative startups which has come up, which have made their name globally, right? So earlier it used to be most of the people used to rely on government jobs. But in last 40 years, the privatization has taken place, and the privatization would not have taken place unless entrepreneurs or people like us would have taken that initiative. So it clearly shows like how entrepreneurship actually not only is important for people, but also how it helps build a nation. So, as I was mentioning previously, what are the prerequisites to be an entrepreneur? हम सब लोग entrepreneur बनना चाहते हैं. We always say कि we cannot, हम लोग ये business start नहीं कर सकते. I cannot be an entrepreneur because I do not come from a business family. मेरी family में तो business होता नहीं है. Either my parents are from service class or we are agriculture based family. So is it important or is it mandatory that a businessman should come from a business family? That is one of the things. No, it is not. You don't have to be from a business family. जितने भी अभी आपको startups दिख रहे हैं, सभी लोग ज़्यादातर सभी लोगों का फैमिली बैकग्राउंड आप देखेंगे कि सर्विस क्लास या एग्रीकल्चर बेस्ड था, फार्मिंग बेस्ड था, एंड देन they took up their studies, did well in studies, and फिर आगे चल के उन्होंने अपने startups start किए, maybe after working for a few years. Do you have to have a good financial backing? हम लोग कहते हैं कि हमें अपना business start करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, right? So no, it is also not a prerequisite. आपको business चलाने के लिए पैसा चाहिए, definitely, but ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है तो यू कैन नॉट स्टार्ट योर जर्नी. क्या आपको अपना डोमेन और टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है? क्या आपके पास एक नेटवर्किंग स्किल्स होने चाहिए? सो यस, आपको डोमेन और टेक्निकल नॉलेज डेफिनेटली चाहिए. अगर आपको जिस भी बिजनेस को स्टार्ट करना है उसका नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग स्किल्स आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाए, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सोसाइटी एट लार्ज है, राइट? एम्बिशियस, यस, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बी एम्बिशियस. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोचो कि मैं इतना एक बिजनेस बनाना चाहता हूँ जिससे बस मेरा थोड़ा बहुत काम चल रहा है. सो वो इट वोंट लास्ट लॉन्ग. यू हैव टू हैव स्काई हाई एम्बिशंस. Passion for work,
डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आप देखेंगे वो 24/7 मोड में काम करते हैं बिकॉज दे लव देयर वर्क सो मच. सो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि 9 बजे अब मुझे ऑफिस जाना है और 5 बजे मुझे घर वापस आ जाना है. एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादातर ये होता है कि वो घर और ऑफिस सेम ही होता है और इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि वो घर पे है ऑफिस में. एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो मैंने अभी सभी एंटरप्रेन्योर्स में देखे हैं. दे आर वेरी पैशनेट अबाउट गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड डूइंग समथिंग फॉर देयर कंट्री. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस. क्योंकि इसके ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ना आप देखेंगे मोर और लेस जॉब में भी जरूरी होता है. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में देयर इज अ वेरी बिग ड्राइव कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय सोसाइटी, आई हैव टू गिव बैक and contribute to my country. So about myself, नहीं मैं एक business family को belong नहीं करता हूँ. My father used to work in a sugar industry in Punjab, and we were like all of you are a, what to say, middle class family, typical middle class family, 3 siblings, parents, and father was doing well का मतलब है कि जॉब थी और वो हम लोगों को पढ़ा पाए अच्छे से. And back then the fees was not very when I took admission in this college, ललित शर्मा सर ने मेरा रिसिप्ट मेरा एडमिशन लिया था. I know मेरे पास वो रिसिप्ट अभी भी है, ललित शर्मा सर का सिग्नेचर है उसके ऊपर. The fee was only 3600 rupees. तो पेरेंट्स के लिए इट वाज क्वाइट अफोर्डेबल. अभी तो शायद बहुत महंगा हो गया इंजीनियरिंग करना. गुड फाइनेंशियल बैकिंग. सो माय फादर वाज जस्ट हैड इनफ मनी कि वो हमको पढ़ा सकते थे. ही हैड नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, सो देयर वाज नो सच फाइनेंशियल बैकिंग जिससे मैं अपना बिजनेस. So your microphone is off. Sir, you are not audible. हेलो. Not अच्छा, कितना मिस कर दिया हम लोगों ने. last one. Last 1 minute. ओ अच्छा, तो मैं ये वाला स्लाइड फिर से शुरू करता हूँ, राइट. Yes, sir. Yes. इससे पिछला वाला स्लाइड हमने शायद मैं ऑडिबल था, राइट. Yes, sir. अच्छा ठीक है. सो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट माई सेल्फ. सो हमने लास्ट स्लाइड में देखा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या ज़रूरी है. सो यहाँ पे इस स्लाइड में मैं अपने बारे में बता रहा था कि I do not come from a business family. My father used to work in sugar industry, and we are from a very typical middle class background. So my father had just enough, had good enough income to support a family of 5, 3 siblings, and my parents, or they were able to teach us. And I was telling कि back then education was also not very expensive. मेरा fees जो था that was for the first semester was 3600 rupees. ललित शर्मा सर ने मेरा एडमिशन किया था, so I still have that receipt with me जहाँ पे ललित शर्मा सर के signatures हैं with the 3600 amount. So I did not have any kind of financial backing अगर मुझको अपना कोई business start करना था, right? So then टेक्निकल डोमेन नॉलेज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. क्योंकि मेरा बिजनेस आई एम इनटू आईटी एंड बट माय कॉलेज वाज और माय एजुकेशन वाज अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो आई बाकी सारा प्रोग्रामिंग एटसेट्रा, राइट.
So though हमारे mechanical engineering में काफ़ी सारी languages थी, तब Fortran था and there were a few other languages which I did very well. लेकिन उसके बाद में I undertook few courses, did lot of self study. Then was a good networking skills. Good networking skill का like it's very important. आप चाहे job में जाएं, आप चाहे business करें अपना, but it is very और प्रोएक्टिवली लोगों को रीच आउट करें. सो यू विल सी कि जब आप लोगों का हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत कुछ खुद भी लर्न करते हैं. आपको लोग जानने पहचानने लगते हैं और उसका बहुत आपको बेनिफिट मिलता है इन योर बिजनेस और प्रोफेशन. इट्स ट्रू फॉर जॉब ऑल्सो, राइट? सो yes, I was very ambitious. I wanted to do something big. Passion for work was huge, because I used to love my work, I was very passionate about it. Yes, I was very ambitious also. I didn't want to settle for less. Back then also, there were, जैसे अभी आजकल सब लोग कनाडा जाना चाहते हैं. So back then, ऑस्ट्रेलिया जाने का बहुत क्रेज था. People want to go. I guess हमारे बैच के out of 120, शायद 75-80 जो स्टूडेंट्स होंगे, बैचमेट्स थे मेरे, वो भी शायद सारे बाहर सेटल हैं. बहुत कम लोग हैं जो इंडिया में सेटल हैं, और जो लोग शायद इंडिया में रह गए उनका शायद वन ऑफ द रीज़न वाज दैट दे वांटेड टू गिव बैक टू दिस कंट्री, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो हैं. सो या दिस इज़ अबाउट माई सेल्फ. नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन. जैसे मैंने बताया कि मैंने फिरोजपुर से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है. देन इट यूज्ड टू बी नोन एज शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और अभी तो उसका नाम चेंज हो गया. सो नाउ इट्स अ यूनिवर्सिटी. सो उस टाइम का सिनेरियो अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, नॉट याद हो, जो Y2K was one of the thing which actually gave a very big thrust to Indian IT industry. So मैं उसमें नहीं जाऊँगा what was Y2K, I guess आप लोगों को आइडिया ही होगा. So when I graduated in 1999, I had two options. या तो मैं M.Tech या MBA कर लेता, या फिर मैं जॉब कर लेता. I opted for job. मैंने नाहर एंटरप्राइजेज लुधियाना में जॉब की, and I got this reference from my father who was already working in the same organization. So he got my first job, and he helped me get my first job. I stayed there for 7 months क्योंकि मैं और फादर अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, it was not comfortable to both of us. So I then moved to some other industry. So JK Tires, which is a very big JK Industry, जो बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका शुगर डिवीजन था. So I moved there वहाँ पे. So I was working in a cogeneration power plant. असाटी सर का जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, वो मतलब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे. बहुत कम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में आता है, बट आई वाज वन ऑफ देम, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू असाटी सर. लाइक आई हैड सो मच इंटरेस्ट. सो इस जॉब में जब मैं था, सो दे वर कमिशनिंग पावर प्लांट. तो देयर आई कुड सी the whole thermodynamics and fluid mechanics in action. वहाँ पे boilers, steam turbines, pumps, talk about it. जो कुछ हो सकता था सब कुछ था. Moreover, there was so much industrial automation also around that. So मेरा जो एक buried interest जो computers में था, it also got revived. So when I was working as a मैकेनिकल इंजीनियर, सो अराउंड द सेम टाइम मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे बैचमेट्स थे या क्लासमेट्स थे फ्रॉम मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टू आईटी. सो आई गेस उसका रीज़न भी था, जॉब सेटिस्फेक्शन इन आईटी वाज ह्यूज एज कंपेयर टू मैकेनिकल. मैकेनिकल में लाइक देयर वाज वेरी लेस व्हाट यू से चांसेस कि आप अपने कोई R&D कर पाए, because like who would let you do R&D on their expensive machines, right? So
more or less it was a routine job mechanical में, and IT was a big phenomena. इतना नहीं था जितना अभी है, but अभी तो it has become very regular thing IT में जाना. But then like it was something which was just evolving. So people were very excited कि चलो IT में जाकर देखते हैं. और jobs were very good paying, right? And these jobs were located in big cities, right? Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, जहाँ पे we had good quality of life as compared to just imagine job in or life in Ludhiana or any such city. So I also applied for Infosys. While I was working as a mechanical engineer, I applied for Infosys, and I guess among 20 other friends who appeared for this test, all of them got selected, but I was rejected. So this was my first rejection in life. And I introspected कि क्या गलत हुआ. I did very well in written examination. In fact, I was the first ranker in the written examination of Infosys जब उन्होंने list निकाली. But I got rejected in interview. So फिर समझ में आया कि hello, am I audible? Yes, audible. Okay, good. So फिर realization हुआ. I did a lot of introspection also. I was torn. क्या करना चाहिए? I did not have much investment also कि करना क्या है, कैसे करना है. So I thought कि अब Infosys में जॉब नहीं लगी तो किसी और IT कंपनी में भी ट्राई नहीं करना है. I then started meeting people who were in IT industry, try to understand क्या चाहिए होता है, क्या करना है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, क्या कर सकते हो उन लैंग्वेजेस को सीख के, फ्रंट एंड बैक एंड ये सब चीज़ें समझ में आने शुरू हुई. देन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि IT में अगर हम लोगों को कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो कैसे बनाना होता है, जो आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है कैसे बनाना होता है. Because whatever knowledge I had, it was more about desktop application वगैरह बनाना. So I got acquainted, and few of friends from college, they were in Delhi. So I moved to Delhi with them, and I did a course in Java there. So I quit my job already. My parents were not happy at all because I had a very good job, very well-paying job, or they had no idea what is this IT और इसमें मैं क्या करूँगा. जब मैं 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने वो कैरियर परस्यू नहीं किया, तो व्हाट इज़ द गारंटी अगर मैं 2-3 महीने अगर कोई कोर्स करूँगा उससे आगे मैं अपने कैरियर में कर पाऊँगा. सो दैट वाज माय पेरेंट्स. किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी वरी यही होती है. सो देन अगेन आई वाज टॉकिंग टू people की करना क्या चाहिए, and based on my experience of working in the sugar industry, and my father was also from the sugar industry, तो मुझको बचपन से sugar industry के बारे में काफ़ी knowledge थी. Then I figured out कि though all other industries they were progressing very well, IT adaptation was great in all industries, but sugar industry was lagging behind. So I thought of building a portal for sugar industry. So the name of that portal was sugarudyog.com. So 2001 में ये पोर्टल मैंने लॉन्च किया along with one of my classmates from mechanical engineering from फिरोजपुर, जगदीप. So मैंने और जगदीप ने 2001 में पोर्टल लॉन्च किया था हम लोगों ने. We got very good response from the sugar industry, and I traveled across Punjab, Haryana, UP, Maharashtra, जहाँ कहीं भी शुगर इंडस्ट्री थी, एंड एवरीवेयर पीपल न्यू अबाउट शुगर उद्योग. एंड बहुत रिकॉग्निशन मिलती थी, बहुत ट्रैफिक आता था शुगर इंडस्ट्री का वहाँ पे. बहुत कंटेंट हमने बहुत डाला. और जस्ट इमेजिन कि व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई यूज्ड टू बी द जूनियर मोस्ट पर्सन, राइट, एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, एज अ जूनियर इंजीनियर व्हेन आई वाज वर्किंग देयर. Or now, when I started this portal, people started inviting जो sugar mill owners थे,
या जो उनका हायर मैनेजमेंट था, दे स्टार्टेड इनवाइटिंग अस एंड टू डिस्कस कि क्या है ये पोर्टल, कैसे दिस पोर्टल कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम. So this was a very big high for me, and even I was not making any money from this portal, but the kind of recognition I got was even my parents were not then impressed कि इसका नाम है तो शायद money and everything will also follow, but वैसा हुआ नहीं. sugarudyog.com ने कभी पैसा नहीं बनाया. We could never break even. So अभी क्या करना था, 2 साल हो चुके थे शायद तब तक, and either I had to pack up and find a new job. That was very again easy for me, and I again had a lot of pressure from my friends also. Now whatever you wanted to do, you have already done. Abhi job mein aa jao. My parents were also kind of creating that pressure on me ki job mein aao and let's get married and all those things. But all those things were actually not were my priorities. I thought कि किसी तरह से sustain करते हैं. So then I started picking projects as a software solution provider, right? So I started building small softwares for छोटी जो telecom companies थी या अलग portals से वो करना शुरू किया. I already had a name और उस name के basis पे मुझे projects मिलने शुरू हो गए. So then I founded a company called sugarudyog.com को shut down किया. Created a company called Intense Consulting. So इसमें हमने बहुत सारे experiment किए. हम लोगों ने बड़े innovative से softwares बनाए. Back then internet was not there. So data transfer करने के लिए from a very remote place जहाँ पे internet connection नहीं है but phone connection है, we created a software which would convert the data into SMS. उसको एनकोड करता था एंड देन SMS सेंड करते थे हम लोग, और दूसरे एंड पे हम लोग वो SMS को रिसीव करके डिकोड करके उसको अपने डेटाबेस में एंटर करते थे. सो ये हम लोगों ने किया एंड आई गॉट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम TFAC. TFAC इज what to say entity of Department of Science of Technology. TFAC का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल. तो उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दिया एक पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए. एंड देन वी टाइड अप विद टाटा BP, जो हम लोगों ने विलेजेस में जाके कियोस्क लगाए जहाँ से हम लोग जो शुगर केन का प्रोक्योरमेंट होता था शुगर इंडस्ट्री का फ्रॉम द विलेजेस, जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी था ना इंटरनेट था, वहाँ से हम लोग डेटा शुगर केन परचेज का डेटा कैप्चर करके हम लोग सेंड करते थे. सो इस टाइप की मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस पे काम करना शुरू किया. सो शुगर इंडस्ट्री के लिए काम किया, पेंट इंडस्ट्री के लिए काम किया, टेलीकॉम के लिए काम किया. सो पूरा शिफ्ट हो गया. लाइक हमने अपना बिजनेस मॉडल शिफ्ट किया फ्रॉम अ शुगर पोर्टल जो कि एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री था. हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग आए वेयर वी वर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स for our clients. So then we started working for foreign clients also. We were working for mortgage industry. I guess we were now earning 10 times. जो पहले हम Indian sugar industry, telecom industry के लिए software बनाते थे. So then when we started working with US based companies, so we were making 10 times profit. Team expand हो रही थी, responsibilities बहुत increase हो रही थी, growth was exponential. So expenses were high, but like it was all going well. So almost 50% or more than 50% of the business was coming from US. 2007 में, if you guys are aware, US में recession आया, subprime crisis बोलते हैं उसको. And that recession first hit the mortgage industry, जिस industry में हम लोग काम कर रहे थे, right? So we were one of the first, I would say, affected industry.
क्योंकि मॉर्गेज में हम लोग काम कर रहे थे, वी वर द फर्स्ट कैजुअलिटी एंड ऑल ऑफ द क्लाइंट्स दे जस्ट वैनिश्ड इन जस्ट कपल ऑफ वीक्स. सो हमारे एक्सपेंसेस एंड टीम रिमेनिंग द सेम, हमारा रेवेन्यू हाफ रह गया और वी वर नॉट एबल टू इवन पे सैलरीज एंड पे रेंट एटसेट्रा. सो अगेन वी वर बैक टू स्क्वायर वन. हम लोगों ने शुगर उद्योग जब बंद करके अपना कंपनी स्टार्ट किया था, सो हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे विल बी अगेन इन द सेम सिचुएशन, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर इन द सेम सिचुएशन जस्ट 3 years, right? 2008, clients vanished, projects collapsed, team collapsed. We were a very small company and with very less resources. So obviously we did not have enough buffer कि हम लोग अपने टीम को support कर पाते. So the team they left us, they joined whatever opportunity they received. So the whole team collapsed. But domestic clients से जिनको लेकर हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते रहे. Then domestic clients को हम लोग कभी भी like का मतलब इंडियन क्लाइंट्स, राइट, ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि आपका पैसा नहीं मरता, बट दे गिव यू ऑल्सो पेन, राइट? दे पे यू लेस मनी, लॉट ऑफ एफर्ट्स, काइंड ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म है या उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है जितना वेस्ट में है. सो वो प्रॉब्लम रही हमारे साथ, बट लाइक इट हेल्प अस कीप द बिजनेस रनिंग. Then in 2013, I set up another company in partnership of one of my client. जब सब कुछ businesses collapse हो रहे थे, तो one of the client was in Germany and उसका भी business collapse हो चुका था, and he also had nothing else to do. Then I gave him the idea because I pitched him कि why don't you actually start taking projects of software development from there, and we already have a team here, so we can deliver the projects from India. यहाँ पे one thing I would like to mention, our focus on quality, our focus on client commitment was so high that all our clients always had high praises for us. They knew that how reliable we are, right? So this client, or this now my partner, Henning Thule, and he was so amazed with the work, the way we used to do the work. He said, let's set up this company. And in 2013, we set up this company. Now we are 125. So you can hear me fine, right? Hello? Yeah, please go ahead. Okay. So we have offices in Mohali, Ahmedabad, Berlin, and New York. We work with e-commerce industry, we work with IoT, we work on health industry, we work in food industry, and like other diversified sectors. We have clients across the globe. Few of the names that you might be aware, like Bosch, Siemens, AC Nielsen, GFK, Audible. These are few of our clients. Let me run a small video. देखना आप लोगों को, I hope आप लोगों को शायद ऑडियो भी आ रहा होगा. Welcome. Audio At 5. of the video. Can you see the video which I am playing? Hello. आपको वीडियो सुन रहा है जो मैं प्ले कर रहा था अभी? वीडियो आपका आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा था? यस सर. ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा था? आ रहा था सर. Yes, sir. So this is a brief, very small video about our current office. Welcome to our modern and vibrant office space.
just at a 10 minutes drive from International Airport, a home for best of the best engineers and experts in their domain. Hi, welcome to BT NETZWELT. Come, let me show you around. This is our warm and welcoming reception area. Hi. Such a seamless and touchless transition and entry to the office. Stepping into a collaboration area, a place where you can have light conversations. As we move to the left of our collaboration area, you'll see a diverse teams immersed in their work. Each team has its dedicated workspace, fostering efficient communication and collaboration. The customized workstations are ergonomically designed and custom-built to ensure comfort and privacy. Here you can see our web, e-commerce, and business development teams. And right side, they are creating magic every day. Oh, I got a call. I'll be back in a minute. Now, let me now show you the boardroom. So this is a boardroom where most of the strategic decisions of the company are taken. Now I'm going to show you different meeting rooms. These are named after international cities representing our global presence. From Sydney to Paris, Boston, Lima, Dublin, all these rooms facilitate seamless collaboration with colleagues from around the world. And this is our state-of-the-art Founders Room. So let me show you Moksha. This is my personal favorite room. We break out here from our busy work routine. You come here, either you read a book or just like me, take a quick nap and just relax. So we have private lockers for all our employees where they can keep their valuable stuff. And now we are entering the most exciting zone of our office, which is awesome. Come, let me show you around. So you enjoy your delicious meals, break out, play some games. Let me fetch my drink in the meanwhile. That's refreshing. Awesome also has a play area where we have games like soccer, we have PS4, we have virtual reality. It really adds to the overall vibe of awesome. So you can brew your favorite coffee, have some fresh fruits, and make your favorite customized sandwich the way you like it. Thank you for joining us on this office. Welcome to our... So yeah, this was about our current office, right? So I was recently awarded this appreciation award by Honorable Technical Education Minister of Punjab, Mr. Harjot Singh Bains. And of course, Palkar Singh sir, you can see in this picture. So he's again one of my teacher during the mechanical engineering days. So as I was saying, as I was mentioning earlier, it is very important for an entrepreneur or for anyone for that matter to have good networking skills, right? So keeping in touch with your friends, with your teachers who have contributed towards your success is very important. It should not be कि अभी तो मैं ये बन गया या वो बन गया. So you would always need help of your friends, of your teachers, of your family members, always, right? So whatever I have achieved till now is because of contribution from everyone who at some point of time helped me indirectly or indirectly, right? So right, because this is about an entrepreneurship, I would
like to just give me a moment. Let me take few slides. I guess we have some time left, so let's see what's good for you, right? So stable job or a startup. Like if you want to be an entrepreneur, you would like to set up something for yourself. But like yes, stable job is also kind of an option for many of you. I can't compare the two, right? No one can do. So as I mentioned, a few of my college mates, batch mates, they are heading some of the big brands, CEO of Capgemini, Future Group, Borges, and they have attained good heights in their professional career. So, but let's see what entrepreneurship offers. Quality of work, because in the first stage of job, you are only supposed to do a monotonous job. जब आप initial days of your job, आपको एक जो कुछ भी करने के लिए दिया जाएगा as an employee, most of the time it lacks any creativity, or you won't be encouraged to do anything new in your initial days of your job. It's money, right? जितना आप टाइम लगाओगे, आपको रिजल्ट्स अभी नहीं तो आने वाले टाइम में यू गेट दोज रिजल्ट्स, राइट? Results doesn't always mean money, right? Money is just a byproduct of the success. You keep slogging, and maybe after a journey of 10 years, own hands, nobody is से बात करते हैं कि आप अगर आपका अपना बिजनेस है, यू नेवर रिटायर. लाइक अगर आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखें, टिल द लास्ट डे ऑफ देयर लाइफ दे आर वर्किंग, बट इन जॉब मे बी आफ्टर 58-60 years you'll have to retire, even if you don't want to retire. As an entrepreneur, whatever you are building, if you're building a company like this, the assets that you're building are going to pass on to the next generations. Which of course एक सर्विस क्लास फैमिली में, या अगर आप इफ यू आर अ सर्विसमैन तो ऐसा नहीं होता. आई गेस दीज आर द फ्यू ऑफ द थिंग्स जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या आपको सर्विस में जाना है, राइट? सर्विस में फ्रॉम द डे वन यू स्टार्ट गेटिंग सैलरीज, गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. आपको फ्रीडम मिल जाता है कि आपने छुट्टी ली, यू अप्लाइड फॉर द लीव्स विदाउट एनी टेंशन, यू आर ट्रैवलिंग. फॉर एन एंटरप्रेन्योर दैट नेवर हैपन्स. यू आर 24/7 वर्किंग. नहीं भी है, एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट इज देयर. But as an entrepreneur, you are also contributing in nation building, right? You are giving employment, direct and indirect also. You can do research and development. You can bring out new things which would help in the progression of your nation. You are directly contribution to GDP. Just imagine, apart from the salary or apart from the profit that I am making from my company, how much tax I am paying, right? So that makes me feel very proud. I can see, like I can literally see this is what I have contributed to my nation. There are social factors also contributing back to society. There are various ways in which an entrepreneur contributes back to society. आप जो weakest strata या lowest strata of the society पे लोग होते हैं, आप उनको help कर सकते हो, करते हो. Then you see that you have that ability to change someone's life. You have that power, right? क्योंकि you are an entrepreneur, so you have that power कि आप किसी की लाइफ को चेंज करते हो. सोशल स्टेटस इज वेरी बिग थिंग एज एन entrepreneur. चाहे आपका एक छोटा सा ही सेटअप है, you get lot of recognition. People value you a lot as compared to being a employee, even if it is an employee at a high
rank in a private company or public company, entrepreneur का एक social status different ही होता है. And then you can do multiple things, right? So मैं अपनी IT कंपनी चला रहा हूँ, तो हो सकता है कल को मैं अपना हॉस्पिटल या मैं अपना रिजॉर्ट सेटअप कर लूँ. I can do so many things together. So you see कि इन सब चीज़ों को pros and cons हमने देखे. Now it's your call, your situation. You have to see कि what suits you best, what suits your situation best. अभी तो एक कैरियर ऑप्शन पहले मेरे टाइम में जैसे जॉब एंड बिजनेस था, अभी तो एक और कैरियर ऑप्शन हो गया कि कनाडा चले जाओ. आई एम टोटली अगेंस्ट इट. कनाडा जाओ, कनाडा जाके आप अपनी कंपनी सेटअप करो तब जाओ. वी हैव सेट अप आवर कंपनी इन यूएस, इन कनाडा, राइट? So when you go there as a job giver, as an employer, you are treated entirely different. Rather than just moving to Canada, dumping your degree and knowledge, whatever you have done till now. So from my point of view, that is not the best decision that anyone would take. Entrepreneur मोहाली या पंजाब रीजन में आई कीप मीटिंग सो मेनी entrepreneurs जो सेम मेरी तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, entirely from farming family or service class family, and they are doing so good. जॉब में भी मैंने देखा है, like we are struggling to get good people whom we can employ. Salary is not a bar. We are ready to offer as high salary as someone would want, but that kind of talent is not available, unfortunately. But yeah, opportunities are limitless. It is just about how you take advantage of the opportunities which are right in front of you, rather than saying कि India में कुछ नहीं बन सकता, let's go back to Canada or wherever. So that's it. This is my email address. आपको LinkedIn पे भी you can connect to me. You can send me an email at this email address. If you need any help, if you need any information, if you need any hand-holding, I'm always available. I love meeting people. I love sharing my whatever knowledge or information I have. So I'm always open for that. So feel free to reach out to me. Yeah, that's it. Thank you. If you have any questions, feel free to ask. Like, I am available. किसी का कोई क्वेश्चन है? Anybody having any question? Hello, Darsana. Anybody having any questions? You can. I wanted to ask you that despite having so many setbacks after failing multiple times, how did you find the motivation to continue your journey and to reach the point where you are right now? How did you get the courage, the motivation to persevere? Hello. Please repeat the question. You are not audible, sir. Yeah, if someone has a question, kindly maybe either post it in chat, or I was not able to hear that question very properly. If someone can help me with the question. Yes, sir. Hello. हाँ जी, प्लीज. सर फोन दीजिए, सर के फोन से पूछो. पीछे जाके बोलो. उस साइड चले जाओ, उस साइड चले जाओ.
Hello. हाँ जी, Can you hear me? I can hear. थोड़ा सा echo है. I wanted to ask you, like, how did you manage to get the motivation to persevere after having so many setbacks? The motivation, I guess, no one can motivate you. No one else can motivate you. That desire of keep moving, जो आपके अंदर से ही होना चाहिए. If you're passionate about what you are doing, I don't think any external motivation is required. भाई उस बंदे को बोलो अनम्यूट करना है. I want to ask, like, what was the time test and Pardon? what drove you to, like, persevere in such difficult circumstances where you actually failed several times, got rejected in Infosys, yet you managed to start your own company and reach the point where you are right now? See, like if you are committed to task, if you are committed to your idea, like no matter whatever kind of challenges are there, you just have to see if someone else can do, why can't you? So that is, I guess, that was the only thing. And I had a lot of self-belief, I guess, and I kept on telling. So one of the things which was very common, even my parents at one point of time, they told me that, look at your friends, people are settling in US, Australia, Europe, doing so good, and you are struggling, right? So even like my parents are no different from parents जो आप सब लोग okay, but I always thought so कि ये तो भी beginning है, like it will, like after we'll see what happens 10 years from now. And अभी ऐसा like जो भी मेरे friends हैं, जो हम लोग मिलते हैं, and they always now the situation has changed. They are telling me कि अच्छा हुआ you started your own venture, you did not move out of India. जिस टाइप के challenges उन लोगों को वहाँ पे face अब भी करने पड़ रहे हैं versus the life in India when you are kind of successful, when you are earning good is very different. So जो challenges मैंने तब face किए थे वो challenges वो आज face कर रहे हैं, and facing challenges in your middle age is far more, I would say, difficult as compared to facing the challenges in your early age. I was also lucky कि मेरे को responsibilities नहीं, I was already working, और मेरे ऊपर कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी. ऑल आई हैड टू डू वाज लाइक आई हैड टू अर्न फॉर माई सेल्फ. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग. और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द लाइफ या द नीड्स ऑफ द लाइफ वर वेरी बेसिक. सो आई वाज एंजॉयिंग व्हाट आई वाज डूइंग. जब आप थोड़ा सा काम करते हो और आपको थोड़ी सी रिकग्निशन मिलती है ना, दैट वर्क्स एज अ फ्यूल. सो इन माई फर्स्ट वेंचर, when I launched this sugar industry portal, I met almost all the top shots of sugar industry. I met them in their own boardrooms, right? I was invited. As I mentioned, when I was working as a junior most engineer, like as a fresh graduate training engineer in an organization, no one would know me. इवन मेरे डिपार्टमेंट में भी लोग मुझे नहीं जानते थे. बट व्हेन आई स्टार्टेड माय वेंचर, और पीपल डिड नॉट नो कि कौन है ये, बट दे वुड सेंड मेल कि यू हैव लॉन्च दिस पोर्टल एंड वी वांट टू नो अबाउट इट, वी वांट टू नो कैसे ये बेनिफिशियल रहेगा. सो दे यूज्ड टू इनवाइट मी इन देयर ऑफिसेज, बोर्ड रूम्स, व्हेन यू आर एक्चुअली मीटिंग इंडस्ट्री स्टारवर्ड्स. उससे जो मोटिवेशन होता है ना, दैट एक्ट्स एज अ फ्यूल. देन यू नो कि अच्छा ऐसा है तो इफ आई एम बिट मोर सक्सेसफुल, आई विल गेट इवन मोर रिकॉग्निशन. सो वो होता है, इट्स आई गेस अ परपेचुअल काइंड ऑफ अ साइकिल है कि आपको थोड़ा सा जो मोटिवेशन, थोड़ा सा सक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है. यू हैव टू जस्ट वेट, यू जस्ट हैव टू सस्टेन टिल यू achieve that first taste, that first bit of success. And success is not in terms of money, I would say.
जो आपका आइडिया है, उस आइडिया का जो रिकॉग्निशन है, उसी को सक्सेस मानिए आप। I also want to ask, like, what role did your friends play in your life, the people you were surrounded with, apart from your teachers? A lot. सही जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे फिरोजपुर के, अगेन हमारा जो बैच था, जो फर्स्ट बैच था जो कॉलेज का, लाइक अगर आप लिंक्डइन पे देखोगे, दिस गाइज आर वेरी हाईली प्लेस्ड नाउ, बट बैक देन वी ऑल वर स्ट्रगलिंग, देयर वर नो जॉब्स आफ्टर कॉलेज। अभी तो प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज आती हैं। व्हेन वी पास आउट इन 1999, मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी आई थी, बिकॉज हमारे पास ब्रांचेस थी मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। तो प्लेसमेंट वाज लिटरली नॉट देयर। तो हम सब लोग कॉलेज में भी अच्छे से कनेक्टेड थे, कॉलेज के बाद भी कनेक्टेड रहे। होता था, हेल्प करते थे। फॉर एग्जांपल जब मैंने शुगर इंडस्ट्री का जो पोर्टल लॉन्च किया, दैट वाज विद माय क्लासमेट जगदीप पंजाब यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एंड ही वाज द वन लाइक हु एनकरेज्ड मी कि ट्राई करते हैं, बिकॉज यू कैन ऑलवेज find a job, right? So why don't we together try this? So Jagdeep ने मुझे बहुत motivate किया है ना, and Jagdeep we started this portal in sugar industry. मैंने when this second venture मेरा जो था Indians Consulting, when it shut down, तो मुझे before it shut down actually, so one of my again college friend, he guided me कि how to find बिजनेस इन यूएस, राइट? आपको इंडिया में बैठ के बिजनेस अगर यूएस में करना है तो वो कैसे कर सकते हो? दैट वाज अगेन गाइडेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड। एक चीज़ मैं मिस कर गया, वन ऑफ द फ्रेंड हु एक्चुअली आई स्टेड विद दिस फ्रेंड फॉर 3-4 months इन दिल्ली, अगेन फ्रॉम कॉलेज। सो जिसके साथ रह के आई डिड अ कोर्स इन जावा, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स इन आईटी। सो फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन तो इमेंस है। ये तो वो बड़े इंटेंजिबल काइंड ऑफ, बड़े टेंजिबल कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, बट इंटेंजिबल बहुत होता है। इंटेंजिबल होता है कि कीप, आपने किसी ने पूछा था कि मोटिवेशन कैसे आती है, फ्रेंड्स ऑल्सो कीप यू मोटिवेटेड। सो वो मोटिवेशन है, इट्स वेरी इंटेंजिबल थिंग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वाज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, आई वुड से आई न्यू कि द हेल्प और सपोर्ट इज जस्ट next door. So yeah, friends, family का जो contribution है, it cannot be, it can never be overstated. And what was the most challenging part of the journey that you felt that you had to overcome to achieve this? I mean, to reach where you are right now. Challenges हर स्टेज के साथ डिफरेंट होते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरा चैलेंज शुरू में सस्टेन करना, इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, या टू एक्वायर फॉरेन क्लाइंट्स वाज अगेन अ वेरी बिग चैलेंज, टू सेट अप दिस कंपनी वाज अगेन अ वेरी, अभी सी लाइक देयर आर सो मेनी बिग कंपनीज इन द मार्केट, उनके साथ compete करना अभी वो चैलेंज है। या अभी नया चैलेंज आ गया, लाइक यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। Our company is under transformation. We are gearing up for next 3 to 5 years. So challenges तो कभी कम नहीं होते। ये एक companies और businesses are ever evolving. और जब एक challenge आता है, because I did not expect that level of success coming from such a small place, small town. I was truly impressed, and I'm sure this run. Truly inspired by it's my pleasure. It's my pleasure. If anyone of you ever want to come to see us, you're most welcome. Asati sir है, कुलभूषण सर है, ललित शर्मा सर है। ये टीचर्स और गुरु ऐसे आपको मिले हुए हैं, तो आप इन लोगों से ट्राई टू मेक बेस्ट यूज ऑफ देम। 4 साल बाद जब आप कॉलेज से, या 2-3 साल बाद जब आप कॉलेज से निकल जाओगे, इट्स गोइंग टू बी अ ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड। अभी आपके पास टाइम है, टीचर्स से गाइडेंस लें, और
अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर द वर्ल्ड आउटसाइड कॉलेज. यू आर गोइंग टू फेस, आपको पता है वैसे कि लाइफ आउट ऑफ कॉलेज इज गोइंग टू बी वेरी टफ. हाउ टफ इट इज गोइंग टू बी यू विल ओनली रियलाइज आफ्टर यू हैव पास्ड आउट ऑफ कॉलेज. So use this time very judiciously. This time is not going to come back. And I can very well say this to you because मैं आप लोगों के ही I can relate to you and you can relate to my journey, right? So it's not a, I'm not preaching. ये बड़ा practical aspects है. So again, thanking you all for giving me this time and opportunity. And feel free to reach out to me अगर आपको कुछ information या कोई help या assistance चाहिए. Thank you. Have a great day. Bye bye. It is time to express our gratitude for all the support, hard work, and contributions that have made this event a success. I am pleased to invite Dr. Arun Kumar Asati to deliver the vote of thanks. So, hello. Good afternoon, everyone. And it has been an honor to be a part of this wonderful talk. Right? On behalf of the university, I would like to extend my heartfelt gratitude to our admired speaker, Mr. Surender Vikram Singh, founder of the VT NETZWELT Private Limited, Mohali, for sparing his precious time and delivering valuable motivational talk for us. Thank you very much, my dear Mr. Surender Vikram. My sincere thanks to Honorable Vice Chancellor, Registrar, President IIC, the heads of the various departments, faculty and staff who supported the event throughout. Thanks Mr. Muniz and the students IIC cell committee for their input for this session. And wide round applause and thanks to all the participants who are present here or listening on YouTube channel who made the event successful. Thank you very much. And I say one thing for all of you. कहते हैं कि कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो जरा. So you have infinite capacity and sky is the limit, but you have to have passion, motivation and commitment. Definitely you will reach the heights which you want. Thank you very much. हाँ साटी सर, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, फर्स्ट सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी प्रकट कर रहा हूँ कि सुरेंद्र विक्रम सिंह जो हमारे, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड कि ये इतने लेवल पर गए हैं, एंटरप्रेन्योर बने हैं. तो ये मेरे लिए खुशी है और बड़े मान की बात है. और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो भी लेक्चर दिया है, जो भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो इससे मोटिवेट होकर आपने भी अपनी लाइफ में तरक्की करनी है. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब तक आप इस कॉलेज में हैं, यू शुड फील प्राउड दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी. पर जैसे ही आप जाओ बाहर तो हमें प्राउड होना चाहिए कि ये हमारा स्टूडेंट है, जो बच्चा हमारा गया है. तो हमें प्राउड है सुरेंद्र विक्रम सिंह के कि उन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है और इस मुकाम पे पहुंचे हैं. तो मैं सोचता हूं कि ये आगे भी हमारे स्टूडेंट को इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे. प्राउड ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thanks for being with us. Thank you, sir. Thanks for being with us. Now we are going to close the session. Thank you, sir. Thanks for being with us. Now we are going to close the session. Thanks a lot.